students, my name is Shashwat and welcome to SUBCRIBE Science Solutions. In today's class, we are going to learn a chapter of class 12th, Polymers. So what are polymers? Polymer. Poly means many and mers means units. Okay. So what is the basic definition of polymers? So polymers are high molecular containing organic compounds having specific repeating units, and that units are called monomers. Okay. So polymers are high molecular organic compounds having specific repeating units. Okay, that repeating units were called monomers. Okay, examples: polythene, rubber, etc. Okay. So now if we classify our polymers, then they are going to classify into different categories. So the first category is on the basis of source. We are going to divide our polymers on the basis of source. So on the basis of source. On the basis of source. On the basis of source, we are going to classify our polymers into three types. Natural polymer, second, semi-synthetic polymer, and third, synthetic polymer. Okay, so what are natural polymers? Polymers which we obtain from nature, that are natural polymers. Obtained from nature. Example: vitamin, proteins, rubber, etc. Okay. Semi-synthetic polymers. Polymers, or first we are going to understand synthetic polymers. Polymers which we synthesize in industries. Polymers synthesized in industries. Example: polythene, polyvinyl chloride, polyacrylonitrile. Okay, these are example: polythene, PVC, PAN, etc. What are semi-synthetic polymers? These are polymers which we obtain from nature, but industrial processes are applied on them to increase their potential, means their tensile strength, their elasticity, etc. So these are obtained from nature and industrial process is applied to increase its potential. Example: vulcanized rubber. Vulcanized
rubber. Okay, so this is the first classification of polymer on the basis of source. So the next classification of polymers was on the basis of the intermolecular forces present in them. Okay, so on the basis of intermolecular forces present in the polymers. So according to this, polymers are classified in four types. First, elastomer. Second, fiber. Third, thermoplastic. And fourth, thermosetting plastic. Okay. So what are elastomers? Which kind of force present in the polymers? That's why they are called elastomers. So elastomers, polymers which have weak van der Waals force. Polymers which have weak van der Waals type of force between monomers, that type of polymers are called elastomers. Example polythene, rubber, etc. And the property is they can be stressed 10 times of its length. 10 गुना ज्यादा खींच सकते हैं, तो ऐसे इलास्टोमर्स कहलाते हैं. दूसरा है फाइबर्स. जो फोर्स फाइबर्स में होता है, पॉलीमर्स या मोनोमर्स के बीच जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिन मोनोमर्स के बीच, उस तरह के पॉलीमर को फाइबर बोलते हैं. मतलब पॉलीमर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो दो तरीके का हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जिन भी पॉलीमर्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, दैट आर कॉल्ड एज फाइबर्स. फाइबर्स में एग्जांपल नायलॉन 66 एक्सेट्रा या टेरिलीन एक्सेट्रा. ओके. व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक? पॉलीमर्स जिनके बीच का फोर्स इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच का होता है. मतलब दे हैव फोर्स ग्रेटर देन इलास्टोमर एंड लेस देन फाइबर्स, दैट वर कॉल्ड thermoplastic. Polymers having force greater than elastomer but less than fibers, that were called as thermoplastic. Example PVC, PN, PEN, etc. One word comes in thermoplastic, that is plasticizer. What are plasticizers? Compound mixed with thermoplastic
to increase its softness. थर्मोप्लास्टिक की सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए उसमें जो कंपाउंड मिक्स किया जाता है वो प्लास्टिसाइजर होता है। ठीक, बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो इसमें जो फोर्स होता है, इसमें भी जो फोर्स होता है वो इलास्टोमर से ज्यादा होगा और फाइबर से कम होगा। फोर्स ग्रेटर देन इलास्टोमर बट लेस देन फाइबर। तो क्या हो गया अंतर फिर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कि दे बिकम हार्ड ऑन हीटिंग, दे बिकम हार्ड ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक को आप हीट करोगे तो वो सॉफ्ट होते जाएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसी होती है, कैसे पॉलीमर होता है, उनको आप हीट करोगे तो वो और ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। ठीक, तो ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें एग्जांपल जो आता है ऑल टाइप ऑफ रेजिन्स, ऑल टाइप ऑफ रेजिन जो होंगे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जैसे बेकलाइट एक्सेट्रा। ओके, so this is the second classification of polymers on the basis of intermolecular forces present in them. Okay, so the third type of classification of polymers on the basis of type of monomer present. Which type of monomer is present in polymer? On the basis of its classification, we are going to classify the polymer on two bases. First, homopolymer, and the second is copolymer. Okay, homopolymers contain all the same type of monomers. So homopolymer is a polymer which have all same type of monomers, have same type of monomers. Example, PVC, PAN, polythene, etc. Okay, so this is homopolymer. What is copolymer? Different type of monomers are present to form a polymer. That type of polymer is called copolymer, having different types of monomers. Example, terylene, nylon 66, etc. Okay, so this is the third type of classification of polymer on the basis of type of monomers present. So now, fourth type of classification of polymers. This is on the basis of its structures. On the basis of structure of polymer. So in this category, classification of polymers are of three types classified. First is linear polymer. Second is side chain polymer. And third is cross-linked polymer.
So what is linear polymers? As you know that polymers are what? What are polymers? When monomers are arranged in some patterns, then polymers were formed. So when monomers are going to arrange in a linear pattern, means in a specific line, then the type of formation of polymer, that is linear polymer. Means monomers were arranged linearly. Example: PVC, PN, polythene, etc. Side chain polymers. What are side chain polymers? Polymers in which monomers have side chains. Monomers having side chain with linear arrangement. Means monomers have a side chain but they are arranged linearly. Okay, example: isoprene. Okay, what are cross-linked polymers? Cross-linked polymers, let me understand it: the monomers which have side chain and the next monomer attached to the same side chain only. Okay, so monomer having side chain and monomer are attached to the side chain. तो इस तरह के जो पॉलीमर्स होंगे वो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कहलाएंगे. एग्जांपल: bakelite, etc. Okay, so this is the fourth type of classification of polymers on the basis of structures. So now the last type of classification of polymers was on the basis of preparation. So on the basis of preparation, of polymers, there are classified into two types. First, addition polymer. What happens in the addition polymers? आपको पता है मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब मोनोमर्स में सिंपल फ्री रेडिकल एडिशन होगा तो वो एडिशनल पॉलीमर्स बनाएंगे. मतलब सिंपल फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ मोनोमर्स. सिंपल फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ मोनोमर्स होता है. एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए एग्जांपल है पॉलीथीन. ठीक, कैसे बनता है प्रिपरेशन देखते हैं. इथीन पता ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये इथीन हो गया, मोनोमर है, एंड नंबर में होंगे. ठीक, एंड नंबर में. अब उनका रिएक्शन होगा हीट और सर्टेन प्रेशर पे और वो बना लेंगे पॉलीमर CH2 और ये बन गया पॉलीमर. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है मोनोमर्स का. और अभी हमने पढ़ा भी था कि ये किस तरह का पॉलीमर होता है, लीनियर पॉलीमर. एक लीनियर सिंपल चेन फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी समझ लीजिए लीनियर पॉलीमर हो गया. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसका एग्जांपल जो मोनोमर होगा वो होगा
CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे Cl यहाँ पे, ठीक। ये हो गया विनाइल क्लोराइड। वही हीट और सर्टेन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से मोनोमर बना लेगा, CH2 CH Cl, और इस तरह से क्या होगा, ये बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे बॉन्ड्स लग जाएंगे, और यहाँ N नंबर, और ये भी N नंबर में प्रेजेंट होगा। ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पैन का देख लेते हैं। क्या होता है मोनोमर, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, N नंबर में लो, हीट और प्रेशर, CH2 CH, यहाँ पे CN, और ये गया N नंबर ऑफ टाइम्स, बन गया पैन, बन गया उधर। ये PVC ऊपर वाला, वो पॉलीथीन, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है मोनोमर्स का, इसलिए ये एडिशनल पॉलीमर्स होंगे। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, या पॉलीमर जो होंगे वो होंगे कंडेंस्ड पॉलीमर। इसमें क्या होता है, मोनोमर्स का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने का मतलब है कि कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, अमोनिया जैसे सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो क्या होगा, कंडेंस्ड पॉलीमर मींस कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर, कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर्स, that means elimination of simple molecules like water, ammonia, etc. ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए नायलॉन 66, नायलॉन 66. You also know that nylon 66 is a type of copolymer, means different type of monomers are present. So the अगर बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाता है कि नायलॉन 66 के दोनों मोनोमर्स का नाम बताओ। अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा कि नाम बताओ, ठीक। या रिएक्शन कभी कभी आ जाएगी लिखने को, लेकिन नाम ही पूछा आता है। तो इसमें दो होते हैं, पहला तो ये रहा COOH, ये है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो मोनोमर है वो है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, NH2 CH2O6 NH2, ये है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ओके। इसमें किस तरह से रिएक्शन होगा वो भी देखेंगे। एलिमिनेशन होना है तो मान लीजिए आपका ये रहा कंपाउंड्स, ये दोनों लिखे हुए यहाँ पे OOC CH2 4COOH, एंड द सेकेंड आपका यहाँ पे ये रहा NH2 CH2O6 NH2। क्या होगा, सिंपल एलिमिनेशन होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा, जैसे कि वाटर, अमोनिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का रिलीज होगा। जब ये कराएंगे हीट पे तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक। क्या होगा, यहां से OH जाएगा और यहां से अगर इसको इस तरह लिखें तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे किस तरह से क्या बनेगा, इधर से भी यहाँ का OH ही जाएगा और इधर से यहाँ का एक H चला जाएगा। तो नेक्स्ट पॉलीमर मोनोमर दोनों तरफ लगे होंगे, तो किस तरह से लिखेंगे, COO CH2 होल 4
CO, CO यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वाटर का तो रिलीज हो गया, NH बचा, NH, then CH2 whole 6, तो CH2 whole 6, एंड देन यहाँ पे NH बचा, बाकी हाइड्रोजन तो नेक्स्ट मोनोमर में जुड़ जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा एक करके, तो NH बचा, NH, ठीक। और ये आगे इस तरह से दिखा देंगे। तो यहाँ पे अगर ये आप n नंबर में ले रहे हो दोनों चीजें n, तो यहाँ पे ये आपका पॉलीमर बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका कंडेंसेशन पॉलीमर या कंडेंस्ड पॉलीमर्स हो गए ये, ठीक। ये हो गया नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6, 6,6 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन है एडिपिक एसिड में, एडिपिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 हैं, और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन में भी 6 कार्बन है, ठीक। तो नायलॉन 6,6 ऐसे होता है, नायलॉन 6,10 होता है, और भी डिफरेंट तरीके के नायलॉन्स होते हैं, तो वो नंबर ऑफ कार्बन जितने प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ऑल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस कंप्लीटेड। और नेक्स्ट वीडियो में जो बोर्ड में पूछे जाने वाले पॉलीमर्स होते हैं दोनों तरीके के, एडिशनल पॉलीमर्स और कंडेंस्ड पॉलीमर्स, दोनों की एक लिस्ट और ब्रीफ डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।